સુરતમાં એકલ શ્રી હરિ વનવાસી વિકાસ ટ્રસ્ટ દ્વારા કવિ સંમેલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ આયોજન આગામી 26 માર્ચના રોજ સરસાણા પ્લેટિનિયમ હોલ ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. સુરતમાં સરસાણા ખાતે કવિ સંમેલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સુરતમાં આગામી 26 માર્ચના એકલ શ્રી હરિ વનવાસી વિકાસ ટ્રસ્ટ દ્વારા કવિ સંમેલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ કવિ સંમેલનમાં અશોકભાઈ ચક્રઘર, અનામિકાબેન અંબર, શશિકાંતભાઈ યાદવ, અનિલભાઈ અગ્રવંશી અને શંભુભાઈ શિખર અને ગૌરવભાઈ શર્મા ઉપસ્થિત રહેશે. આ આયોજન આગામી 26 માર્ચના રોજ સરસાણા પ્લેટિનિયમ હોલ ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. આ ઉપરાંત આ કાર્યક્રમમાં અનેક આમંત્રિત મહેમાનો ઉપસ્થિત રહેશે. महेश मित्तल, एकल श्री हरि में राष्ट्रीय अध्यक्ष की जवाबदारी। सम्मेलन होने जा रहा है, कब है, कहाँ है और कितने जन हैं? एकल श्री हरि सूरत चैप्टर अपना 29वां वार्षिक उत्सव मना रहा है। इस वार्षिक उत्सव के निमित्त 26 मार्च को सरसाना में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। टाइम रहेगा शाम को 6:30 से लेकर 10 बजे तक। कौन कवि आ रहे हैं? इसमें डॉक्टर अनामिका अंबर, गौरव शर्मा, अशोक जी चक्रधर, शशिकांत यादव आदि कवि आ रहे हैं। इसमें खास कोई उपस्थिति, कोई नेता खास कोई उपस्थिति रहेंगे इसमें? ये कार्यक्रम में कोई उपस्थित खास नेता? हमने इसमें अपने पुलिस कमिश्नर अनुपम जी गहलोत आएंगे और कोसंबा के बहुत बड़े उद्योगपति दिनेश जी गुप्ता वो रहने वाले हैं। बाकी सूरत के उद्योगपति और सामान्य जन सभी रहने वाले हैं। हमने किसी नेता विशेष को नहीं बुलाया है और अभी उनकी संसद और विधानसभा भी चल रही है, इसलिए भी नहीं बुलाया है। और बाकी हम लोग कभी बुलाते हैं।